So welcome everyone. Today we are going to start with a new chapter, that is quadratic equation. Remember that this is not a complete chapter, but we are revising the important parts of quadratic equation and also the PYQs, that means the questions that were asked in past few years. So definitely this is going to help you for the last month revision or the last moment revision of this chapter. So today we are going to start with quadratic equation, and of course we have to start. कुछ भी चालू करना है तो उसका definition, उसका basics, fundamentals से हमको start करना है. So I will start with the basic definition of quadratic equation. Let me share the screen with you. One important thing about this video is you need to understand that सिर्फ वीडियो देखने से कुछ काम नहीं होगा. आपको वीडियो के साथ साथ नोट्स और आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. सो यू कैन पॉज द वीडियो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आए तो अपना वीडियो पॉज करके जो क्वेश्चंस है वो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन योर ओन, एंड अदरवाइज द सॉल्यूशंस आर गिवन ऑन द स्क्रीन, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. Right, to begin with, we have to understand what is quadratic equation. So आपने you must have studied polynomials in the previous years. Polynomials, so polynomials में कई तरीके से polynomials होते हैं. So उसका degree जो होता है, that is very important. So what is the degree? Degree is the highest power. So a polynomial like this is there. Let's say this is the polynomial. Okay, now if you look at this polynomial, the degree is the highest power of the variable. यहाँ पे variable x है, a and b are the constant. So in this case, this is called as linear polynomial. Linear polynomial किसको कहते हैं? जब वो degree 1 होता है. This is a linear polynomial when the degree is 1. Once again, the degree is nothing but the highest power of the variable. Degree is equal to 1. Now, the another polynomial that you studied in the polynomial chapter, that is the quadratic polynomial. This is quadratic polynomial. Ax square plus bx plus c. So you observe that the highest power, x का highest power, variable का highest power जो है 2 है. So this is called, when the highest power or the degree is 2, that is called as quadratic polynomial. Now what is quadratic equation? Quadratic equation is definitely, क्या बोलते हैं उसको, जब when the quadratic polynomial is equated to 0, when the quadratic polynomial is equated to 0, ax square plus bx plus c equal to 0. Few important things about this. A, b, c are real. They are real numbers. Okay. Second, a cannot be equal to 0, because a अगर 0 बनता है, if a is equal to 0, what will happen if a is equal to 0? A is equal to 0, if it is there, then bx plus c equal to 0 is the equation which becomes a linear equation and doesn't remain as a quadratic equation. So hence a cannot be equal to 0. Then the third and last is powers of x. पावर्स ऑफ वेरिएबल जो है ना, x वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल है, आर होल नंबर्स. दैट मीन्स 1 2 0 से लेके 1 2 3 4, ये जो है होल नंबर्स है. राइट. नाउ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c is called as, is equal to 0, is called as quadratic equation. और एक चीज आगे चलने से पहले यहाँ पे अगर तू देखेगा तो a क्या है? व्हाट इज a? a is called as coefficient of x square. So if somebody asks you what is the coefficient of x square, you will answer a यहाँ पे. b is of course coefficient of x, and what is c? c is the constant term. c is called as the constant term. जिसके साथ x नहीं है या कोई वेरिएबल नहीं है, उसको कहते हैं हमेशा constant term. So this is
something about quadratic equation. So very fast to revise. First of all, you need to understand quadratic polynomial. It is ax square plus bx plus c. Quadratic polynomial किसको कहते हैं? जिसका डिग्री 2 है. What is degree? Degree is the highest power of the variable in the expression, right? And then this expression or polynomial, when it is equated to 0, मतलब equal to 0 जब लिखते हैं, it becomes a quadratic equation. What are few important things of quadratic equation? In this quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0. a b c are real numbers. इसी चैप्टर में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं. नॉट रियल भी कुछ नंबर्स होते हैं. हम लोग 11th में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाले. पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, जहाँ पे रियल का ऑपोजिट कुछ होता है. अभी आपको मालूम नहीं होगा, बट रियल का ऑपोजिट भी कुछ एग्जिस्ट करता है. अगर रियल है तो उसका ऑपोजिट होता है इमेजिनरी. यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, बाद में जो करने वाले हैं उसमें. Okay, so I'll not get into it right now. So very important thing about the quadratic equation. Number 1, a, b, c are real numbers. Number 2, a is not equal to 0, because a अगर 0 बनता है then it becomes a linear equation. It doesn't remain as a quadratic equation. And the third and last one is powers of x are all whole numbers, right? इसी equation में a को हम लोग कहते हैं coefficient of x square, b को हम लोग कहते हैं coefficient of x, and c जिसके पास साथ कोई variable नहीं है, ओके, उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म. एंड इन जनरल कोई कभी भी अगर वेरिएबल उसके साथ नहीं है देन इट इज अ कांस्टेंट टर्म. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू क्वेश्चंस दैट वर देयर इन द एग्जाम्स. सो हियर इट्स अ March 2020 question. The equation given to us is, the question is, find the values of a and b from the quadratic equation 2x square minus 5x plus 7 equal to 0. So 2x square minus 5x plus 7 equal to 0 is the quadratic equation. This is of the form, अगर इसको ठीक से देखोगे तो ये कौन से फॉर्म में दिया गया है? ax square plus bx plus c equal to 0. In this case अगर मुझे पूछेंगे तो here a का वैल्यू है 2 and बी केयरफुल, बी का वैल्यू कितना है? -5. सी का पूछा नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे. राइट, लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c. तो पहले तो ये देखो अगर ये क्वेश्चन मार्च 2023 का क्वेश्चन है, दैट मीन्स लास्ट ईयर दिस वाज टास्क. सो अगर इसको देखा जाए तो दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. So let me get into the standard form. Y square is minus y square. If I bring it on left hand side, it becomes plus y square. 2y and minus 10 को भी लेके आया यहाँ पे is equal to 0. Now if you observe this, this is in the standard form, which is ax square plus bx plus c equal to 0. The only difference is यहाँ पे y के टर्म में वेरिएबल क्या है? y है. Now if you observe, if there is nothing with y in y square, that is nothing but 1 है. Hence यहाँ पे a का वैल्यू कितना आया? 1 है. If you see that nothing is there but still the term is there, that means 1 है, right? अगर टर्म ही नहीं है तो मतलब वो 0 होता है, और कुछ टर्म है मतलब वो 1 होगा. Okay, b is equal to 2 and constant term c अपने को दिख रहा है, this is equal to -10. Let's have a look at the next question. Now what happens is, before I start with this, okay, before I start with this, I would like to add something over here now. Now this is a quadratic equation. पहले तो हमने linear equation देखा था. तो linear equation में क्या होता है? मान लो ये linear equation है. So I'll give you one example. So if I give you the example of 2x plus 3 equal to 0, a simple, very simple example I'm giving you. So 2x plus 3 equal to 0 जब होता है, and somebody asked me to solve this equation. जब solve करने को कहते हैं इसका मतलब x का value निकालने को बोलते हैं. Remember that whenever the question is solve the equations या solve the equation, इसका मतलब x का value जो भी in other words जितना भी वेरिएबल से उसका उतना वैल्यू निकालना है. तो अभी यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा है,
जिसका पावर या डिग्री 1 है, सो 2x का वैल्यू हो जाएगा -3 एंड x का वैल्यू होता है -3/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x का एक वैल्यू मिल गया। नाउ आई एम टेलिंग यू अ सिंपल ट्रिक, वेरी सिंपल ट्रिक। जब डिग्री 1 है तो सॉल्यूशन भी एक ही है, सॉल्यूशन भी एक ही है, राइट। सिमिलरली डिग्री 2 है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसका डिग्री 2 है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जब डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन 2 होना जरूरी है। 2 मतलब x के 2 वैल्यूज निकल के आएंगे, डिग्री 2 सॉल्यूशन भी 2 ही आएंगे, राइट। अच्छा, सॉल्यूशन का एक और मतलब क्या होता है, इफ आई से दिस इज द सॉल्यूशन, दैट मींस इफ आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, देखो अगर मैं उल्टा सोचूं कि मुझे किसी ने बताया x इज इक्वल टू -3/2 सॉल्यूशन है, आई गिव यू अनदर एग्जांपल। चलो, एक इक्वेशन है, ओके, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, अ सिंपल इक्वेशन अगेन आई एम टेकिंग, और मुझे किसी ने बताया कि x इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन। तो मैं कैसे मान लूं ये सॉल्यूशन है, या तो मैं इसको सॉल्व करके देखूंगा, या तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करके देखता हूँ, 2 इंटू एक्स के बदले -2 डाल दूँ प्लस 4, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर आ रहा है वो वैल्यू पुट करने के बाद, देन वी से दैट इट इज अ सॉल्यूशन, राइट। तो जब डिग्री 2 होता है तो 2 सॉल्यूशन होते हैं, ये भी समझ लेना। ओके, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, x² -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सॉल्व कैसे करना है हम लोग आगे वाले क्लास में देखने वाले, नॉट नाउ। बट इफ आई से चेक वेदर x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन और नॉट, x इज इक्वल टू 3, तो देखो अगर x इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करना है मुझे, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, x के बदले आएगा 3, x के बदले क्या आएगा 3, फिर से प्लस 6, तो व्हाट विल हैपन टू दिस इज 9 3 का स्क्वायर -15 and plus 6. Now if you solve this, you see that this is equal to 0, hence it is equal to RHS, hence we say that x is equal to 3 is the solution, because वो satisfy कर रहे हैं वो equation। satisfy करना है मतलब क्या, वो substitute करने के बाद left hand side and right hand side equal आ रहा है। लेट मी चेक फॉर x इज इक्वल टू 1, क्या x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेट मी चेक। मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में x के बदले 1 लिखूं, तो x के बदले 1 लिखने के बाद 1² -5 इंटू 1 प्लस 6, अगर ये r है तो दिस इज इक्वल टू 1 -5 प्लस 6, कितना हो रहा है, 6 प्लस 1 इज 7, 7 minus 5 is 2, which is not equal to 0, which is not equal to RHS। तो अगर वो RHS नहीं आ रहा है, then x is equal to 1 is not the solution, it is not satisfying, hence it is not the solution, right। याद रखना, एक मैंने सिंपल सा ट्रिक, बिकॉज नॉट दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर अगर 11th में तू स्पेशली साइंस के लिए जा रहा है तो ये चीजें बहुत काम आएगी, कि डिग्री जो है तेरा, whatever your degree is, that many number of solutions are possible। okay, so let us understand boards में इसको क्या क्या पूछे थे। so the first question, determine whether 2 is the root of the equation 2m square minus 5m is equal to 0। this was a question in March 2022। so 2m square minus 5m is equal to 0। okay, so if m is equal to 2, because he says m is the root, right, अपने को चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्हाट विल हैपन टू द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड विल बी 2 into 2 का स्क्वायर -5 into 2। okay, now this is 2 into 4 -10, now that is 8 minus 10, which is -2, which is not equal to 0, which is not equal to RHS। now that means कि m is equal to 2 does not satisfy the equation, m is equal to 2 does not satisfy the equation।
Hence 2 is not the root of 5m square. Oh, I'm sorry, it's not 5m square, it is 2m square. दिस इज हाउ, मतलब मैं ये सॉल्व करने के लिए टाइम ले रहा हूँ बिकॉज अपने को बोर्ड्स में इसी तरीके से पूरा सिस्टमेटिकली अपने को लिखना है. ऑलराइट, वंस अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बट कुछ अलग तरीके से पूछे. फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 3 is a root of the quadratic equation kx square. Now he says it is a root. ये पूछ नहीं रहे, ये बता रहे हैं. Right? In the previous case, it was asked. Now, he says x is equal to 3 is a root, one of the root of the given equation. मतलब क्या है, इसमें अगर मैं x के बदले 3 सब्स्टिट्यूट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना जरूरी है. तो यहाँ पे x के बदले 3 सब्स्टिट्यूट किया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस इज 9k minus 30 plus 3 is equal to 0. Now that means 9k minus 27 is equal to 0. That means 9k is equal to 27. 27 left hand side में minus है, right hand side when you change the side you have to change the sign. तो 27 minus है वो plus हो गया. Now that k is equal to 27 upon 9. Hence k का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है. This is k is equal to 3. Okay, I again repeat, don't just copy the question or don't just watch the solution. You just have to see the question first. जैसे ही मैं ये क्वेश्चन ओपन करता हूँ आपको क्वेश्चन देखना है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है पॉज करके. Okay, this was again an activity question which was asked in the boards. So one of the roots of the quadratic equation is 7 upon 5. Complete the activity. Similar question जो यहाँ पे था वैसे ही है, values change किए हैं. Now what he says, 7 by 5 is the root of the quadratic equation. That means what? We have to put 7 upon 5. m is equal to 7 upon 5 in the equation. जब मैं substitute करता हूँ तो equation ये है मेरा, तो 5 into m square दिख रहा है यहाँ पे, 5 into m square. Okay, now it is I think minus 7 upon 5, not 7 upon 5. Okay, so this is minus 7 upon 5. Okay, so यहाँ पे 5 into, देखो यहाँ पे सॉल्व करता है तो 5 into 7 का स्क्वायर 49 एंड 5 का स्क्वायर नीचे कितना हो जाएगा 25. So 5 5s are 25. So this will be 49 upon 5. Right? Okay, once again rough work check करो. 49 upon 5 minus 14 upon 5 हो रहा है प्लस k इक्वल टू 0 हो रहा है. सो 49 माइनस 14 मतलब इधर आएगा 5 एंड 35 अपॉन 5 प्लस k इक्वल टू 0. Now this is 7. So k becomes minus 7 in this case. The value of k is minus 7. Alright. Let's have a look at this similar question. Once again, one of the roots is, इसका एक रूट कितना है 3. Is it the same that we have solved some time back? kx square minus 10x plus 3 equal to 0 and x is equal to 3 is the root. So same question is there, same question, but यहाँ पे activities में पूछा है. So one of the roots of the equation is 3. That means x is equal to 3. Substitute करना है. So k into 3 का square minus 10 into 3 plus 3 is equal to 0. So this becomes 9k square. I'm so sorry, it is 9k, not k square.
right? This becomes 27. Okay, and the value of k becomes 3. You can see a same question, same answer. K is equal to 3. All right, so this question I'll be not solving in the next class, but in one of the classes I'm going to solve this, right? So the next part is we are going to understand factorization method, how to solve it. So यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ था कि ये सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, this I solved, but how to solve the quadratic equation? Now to solve the quadratic equation, there are four methods. Number one is factorization. Number two is completing the square. Number three is a formula method, which is also called as Sridharacharya's formula. And number four is a graphical method. So apne liye, in our syllabus, we only have three methods which we are going to learn. So in the next class, I'm going to start with factorization method. I'm going to start with the factorization method, where we will understand how to solve the equations with the help of factorization, of course, and one of the important method and one of the so-called difficult method, we will see how to solve this in the next class. Thank you very much. See you soon.